Assalamualaikum. In today's lecture we are going to discuss basic mycology. हम आज mycology start करेंगे. First of all we will discuss basic mycology, then we will move one by one to cutaneous, subcutaneous, opportunistic and systemic fungal infections. First of all, we'll talk about the basic cell structure of fungi. Uh, all of you will know that fungal cell wall consists of chitin as compared to bacterial cell wall which consists of peptidoglycan. ये आप बैक्टीरियोलॉजी में देख चुके होंगे. बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है आइदर दे आर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एसिड फास्ट बैक्टीरिया दे कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन इन दिस सेल वॉल बट फंगल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ chitin, so that's why antibiotics are ineffective against fungi. Next is polysaccharides. ठीक है, fungal cell wall also contain polysaccharides similar to bacterial cell wall, but these polysaccharides are different. One of them is chitin and other is beta glucan, a long polymer of D-glucose, and it is site of action of many antifungals. The third important point is that fungal cell membrane contain ergosterol. It also contains sterol as compared to bacteria which have no cholesterol in their cell wall, but this sterol is ergosterol as compared to human cell membrane which contain cholesterol. ये अगर आप ये देखें तो it is a basic structure of fungal cell wall. ये cell wall में beta glucan and chitin present है. Both are polysaccharides and cell membrane is similarly made up of lipid bilayer like human cell membrane but contain ergosterol as compared to human cell membrane which contain cholesterol. Now discuss some comparison points of bacteria and fungi. First of all, अगर आप देखें तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास वो वायरस होते हैं, सबसे छोटे वायरसेस होते हैं. देन बैक्टीरिया, देन फंजाई आर लार्जर इन डायमीटर एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया. Second is nucleus. Fungi, they are eukaryotes. Bacteria are prokaryotes. You already know the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Then if we talk about cytoplasm, then fungal cell wall contain both mitochondria and endoplasmic reticulum. These are membrane bound organelles as compared to bacteria which lack mitochondria and endoplasmic reticulum. Then if we talk about cell membrane, fungal cell membrane contains sterol like human cell membrane, and the sterol is ergosterol. Bacteria lack sterol in their cell membrane except mycoplasma. Mycoplasma is a wall-less bacteria. It doesn't contain cell wall, so its cell membrane contains sterol for its protection. Then if we talk about cell wall content, bacterial cell walls contain peptidoglycan as compared to its fungal cell membrane cell wall contain chitin. We talk about spores. Most bacteria don't produce spores. If they produce, they are endospores which are just for survival, not for reproduction. Only few bacteria which produce endospores, but almost all fungi produce spores. Either they are sexual and asexual, and they have a role in their reproduction in their life cycle. Then next point is thermal dimorphism. Thermal dimorphism means the organism that exists in two different forms at two different temperatures. Bacteria have no thermal dimorphism. They exist in single form, but some of fungi have thermal dimorphism. They exist as yeast at human body temperature and as mold in the environment. Then we will talk about metabolism. Bacteria, they are obligate anaerobes. They are different type: obligate anaerobes or aerobes. They do not necessarily require organic carbon, but fungi necessarily require organic carbon for metabolism. They have no preformed, they require preformed sources. They cannot produce their own carbon. That's why no obligate anaerobes. Either they are obligate aerobes or facultative anaerobes. Next we talk about growth of fungi. Fungi show two types of growth. They grow either as yeast or as mold. Now what is the difference between yeast and mold? If you observe in the picture, yeast grow as single cell. Okay, single cell which reproduce by budding, reproduce by asexual budding or bud formation, as compared to molds which are also known as mycelia. They grow in the form of hyphae and form mats. These are hyphae, either they are septate or non-septate hyphae. These are two types of growth of fungi, either yeast or mold. Now some fungi are thermally dimorphic. As I have already explained what the term dimorphic means, that the organism grows at different form at different temperature. For example, many fungi are dimorphic. That means they grow at
as mycelium or mold at environmental temperature, which is 25 degrees Celsius, and grow as yeast at 37 degrees Celsius, which is human body temperature. Now, if we talk about molds or mycelium, we already discussed they grow as hyphae. Now, there are two types of hyphae of fungi. Either they are septate hyphae or they are non-septate hyphae. What is the difference between septate hyphae and non-septate hyphae? Septate hyphae have septa in their walls, and each septa contain a single nucleus. As compared to non-septate hyphae, no septa are present in their walls and many nuclei are present. They are also known as coenocytic hyphae. Now, if we talk about metabolism, as I have already told you that most fungi they are obligative aerobes, but some are facultative anaerobes. None are obligative anaerobes. They require a preformed energy source in the form of carbon. That's why they are mostly associated with decaying matter, and habitat of most of them is environment. Exception is Candida albicans. Candida albicans is the only fungus which is part of normal human flora. No other fungi is a part of normal human flora. Then we discuss reproduction. As I have already told you, bacteria reproduce by binary fission. As compared to fungi, they reproduce by spore formation. Either they are sexual spores or asexual spores. So fungi shows two types of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. The structure formed by sexual reproductions are zygospores, ascospores, and basidiospores, and the structure formed by asexual reproduction are known as conidia. Most fungi reproduce by asexual reproduction. Fungi that do not form spores, they are termed imperfect fungi. So this is the life cycle of fungi. We have seen two types of reproduction: sexual and asexual. We see first of all we discuss sexual reproduction. This is a mycelium or mold. We will see different stages in it: haploid, diploid and heterokaryotic. अगर आप देखें सबसे पहले ये हैप्लॉइड स्टेजेस हैं, पर्पल से शो की, देन हेट्रोकैरियोटिक स्टेजेस हैं, देन डिप्लॉइड स्टेजेस हैं. डिप्लॉइड मीन्स 2 एन, हैप्लॉइड मीन एन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, माइसीलियम, इसमें फ्यूजन होगी साइटोप्लाज्म की, प्लाज्मोगेमी. जिस सिंपल सा लाइफ साइकिल एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया हुआ. देन हेट्रोकैरियोटिक स्टेजेस होंगी, मल्टीपल स्टेजेस होंगी, और एंड रिजल्ट उनका क्या होगा, कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई के बाद अल्टीमेटली क्या बनेगा, जाइगोट, विच इज़ अ 2n स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट के मियोसिस होगी, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, आप पढ़ चुके होंगे. प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, डिप्लोटीन है, एनाफेज़ है, टीलोफेज़ है. एंड रिजल्ट क्या होगा, मियोसिस का स्पोर्स बनेंगे विच आर हैप्लॉयड. स्पोर्स देन जर्मिनेट होंगे और माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे. सेकेंड मेथड जो कि ज़्यादा सिंपल है, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द फंगाई. इसमें क्या होगा, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगे, हाइफे से वो स्पोर्स में कन्वर्ट होंगे, स्पोर देन जर्मिनेट होंगे, एंड अब मेच्योर्ड हाइफे और माइसीलियम प्रोड्यूस हो जाएगा इससे. No important spores which are produced by sexual reproduction. There are zygospores, ascospores and basidiospores. Ascus means sac. You can see spores are contained within a sac. In basidiospores, they are contained in a stalk, and the third form is zygospore. No important conidia. As I already told you, asexual spores, they are known as conidia. There are 4 important types of conidia: arthrospores, chlamydospores, blastospores and spongiospores. We will discuss one by one. Number 1 is arthrospores. आर्थ्रोस्पोर्स में क्या होगा, दे आर अराइज बाय द फ्रेगमेंट. अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है सिंपली, तो आर्थ्रोस्पोर्स में क्या होगा, दिस रिप्रोडक्शन कैसे होगी, बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एंड ऑफ हाइफे. इस फिगर में आप देखेंगे, फर्स्ट पिक्चर में आर्थ्रोस्पोर्स शो किए हुए हैं. इसमें किस तरह हो रही है रिप्रोडक्शन, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ एंड्स ऑफ हाइफे. एंड्स ऑफ हाइफे की फ्रेगमेंटेशन हुई, वो स्पोर्स में कन्वर्ट होंगे, वो देन जर्मिनेट करेंगे और एक मेच्योर यीस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड इट इज़ मोड और रिप्रोडक्शन ऑफ कॉक्सी जॉइट्स इमाइटस. नेक्स्ट इज क्लेमिडोस्पोर्स. Chlamydospores are present in the form of single round thick white spores which is attached to a terminal stalk. It is also known as terminal spore, और इसको हम जर्म ट्यूब भी कहते हैं. जर्म ट्यूब फॉर्मेशन, इट इज़ पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडा अल्बिकन्स. नेक्स्ट फॉर्म इज़ ब्लास्टोस्पोर्स.
ब्लास्टोस्पोर्स जस्ट फॉर्म बाय सिंपल बडिंग प्रोसेस, एक हाइफे उसके ऊपर मल्टीपल पार्ट्स बने, वो सेपरेट हुए स्पोर्स में कन्वर्ट हुए, वो जर्मिनेट होके मेच्योर चीज़ प्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स में क्या होगा, एक स्पोरेंजियम होगा, उसके ऊपर एक स्टार्क प्रेजेंट होगी, स्टार्क है, स्टार्क के ऊपर सैक प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ नोन एज स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे। दिस टू टाइप्स, स्पोरोस्पोर्स एंड फाइलोस्पोर्स। एक और क्लासिफिकेशन है माइकोनिडिया की, either if they are very small in size, spores are very small in size, then they are known as microconidia. If they are somewhat larger in size, then they are known as macroconidia. Next is pathogenesis. If we talk about the pathogenesis of fungi, they show two type of pathogenesis. Number one is granuloma formation. What is granuloma? It is a type 4 hypersensitivity reaction, cell mediated immunity involved होगी इसमें। आप ट्यूबरक्लोसिस में देख चुके होंगे ग्रेनुलोमा, अगर कोई पैथोजन इजीली रिमूव नहीं हो रहा तो उसके अगेंस्ट क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, दे विल फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, एपिथेलॉइड सेल्स एंड लिम्फोसाइट, उसको वॉल ऑफ कर देंगे सराउंडिंग कैविटी से। दिस इज़ नोन एज ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। Second mode of pathogenesis is pus formation. They are also produce pus. Examples are aspergillus and sporotrichosis. नो एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन। इफ बैक्टीरियोलॉजी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया टू टाइप्स की रिप्रोडक्ट, बैक्टीरिया में जो पैथोजेंस है वो 3 टाइप्स की होती है। दे आल्सो प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। वो एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन दैन डिजीज़ काज करेंगे, बट फंजाई में ऐसा कोई मोड नहीं है पैथोजेंसिस का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस होस्ट डिफेंस अगेंस्ट फंजाई। इफ वी विल डिस्कस एनी डिफेंस अगेंस्ट फंजाई, तो सबसे पहले किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जो होस्ट डिफेंस है दैट इज़ इंटैक्ट स्किन। इंटैक्ट स्किन में क्या है, फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे, लिपिड्स प्रेजेंट होंगे विच विल इनहिबिट डर्मेटोफाइट ग्रोथ। देन इज़ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा और बैक्टीरिया, अब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होगा जो फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। दैट्स वाई अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स ले रहा है तो then उसमें फंगल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ सप्रेशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। थर्ड, एक रिस्पायरेटरी ट्रैक में हम देखें तो रिस्पायरेटरी ट्रैक में म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेसोफेरिंग्स एंड लंग्स में एल्विलर मैक्रोफेजेस। दे आल्सो ट्रैप inhaled fungal spores, so they are also an important host defense against fungi. Last is cell mediated immune response. कि अगर किसी पेशेंट की सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव है तो इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट होस्ट डिफेंस। दैट्स वाई जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है वो मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में कॉमन है। देन वी विल टॉक अबाउट स्किन टेस्ट। हम डिस्कस कर चुके हैं अगर फंगल के ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव है तो उसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, सिमिलर टू ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। सो काफ़ी सारे फंजाई को हम थ्रू स्किन टेस्ट भी डायग्नोज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलर टू ट्यूबरकुलिन फंगल एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट करेंगे एंड देन वी विल मेजर इन ड्यूरेशन। अगर पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो दैट मीन्स पास्ट एक्सपोजर, दैट डजंट मीन एक्टिव डिजीज़, दैट मीन्स पास्ट एक्सपोजर, दैट मीन्स कि पेशेंट को डिजीज़ हो चुकी है। सो मोस्टली जो स्किन टेस्ट है फंगल इन्फेक्शन के लिए इट इज़ यूज फॉर एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस। अब अगर हम टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन के देखें तो 3 टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। फंजाई शो 3 टाइप ऑफ इन्फेक्शन। नंबर 1 आर माइकोटिक इन्फेक्शन विच इज़ मोड ऑफ इन्फेक्शन और मोस्ट ऑफ द फंजाई इज काज्ड बाय स्प्रेड ऑफ फंजाई इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। सेकेंड इज़ माइकोटॉक्सिकोसिस, इट इज़ काज्ड बाय इंजेस्टेड टॉक्सिन। इसको अपने एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन से कंफ्यूज नहीं करना। लाइक बैक्टीरिया इसमें फंजाई टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे बल्कि वो प्री फॉर्म टॉक्सिन फॉर्म में इंजेस्ट होंगे एंड देन वो टॉक्सिन डिजीज़ काज करेंगे। इसके एग्जांपल्स में एक एस्पेजिलस फ्लेवस है और उसके अलावा 1-2 और एग्जांपल्स हैं, अर्गोटिज्म है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में। थर्ड टाइप इज़ एलर्जीज टू फंगल स्पोर्स। एलर्जिक रिएक्शन होता है, इट इज़ ऑलवेज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस माइकोटॉक्सिकोसिस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।